नमस्सर्वेभ्यः सर्वेषां पुनः स्वागतम्. Let me chant the prayer shlokas. ॐ श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. शुक्लाम्बरधरौ विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधा सहायमति सुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपौ वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे. केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारिपङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्छितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदाम् मूर्तिम् तवार्तिच्छिदम्. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः. अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रिंशत्तमं दशकम् वामनावतारवर्णनम्. So we have seen up to the 9th shloka and the meaning of the 9th shloka also we have seen. And what happened next we will see. That is, Bali Chakravarti just offered Bhagavan in the Vamana Avatara form, and he respected him by giving the seat and then washing his feet and sprinkled that water on his head. Up to that we have seen. So இப்ப பகவான் வாமன அவதாரமா அந்த அஸ்வமேத யாகம் நடந்த இடத்துக்கு போக பலி சக்கரவர்த்தி சுக்ராச்சாரியார் மற்றும் பலர் அவரை வரவேற்று உபசரித்து பலி சக்கரவர்த்தி அவருக்கு பாத பூஜை பண்ணி அந்த பாத பூஜை ஜலத்தை எடுத்து தன்னுடைய தலையில் தரித்து கொண்டார். அது மட்டும் நம்ம இப்ப பார்த்துட்டோம். சோ அடுத்தது we will learn this shloka and then move on to the next shloka. Okay, one more time I will just chant and then we will start learning. आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्य रूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिनिज्य पादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम्. Yes. के कविता भगिनी? आनीतम्. के कविता भगिनी? आमीत्यम्. One more time भगिनी. आमीत्यम्. It is not meetyam. Aneetyam. आनीत्यम्. Aneetam. आनीतम्. आनीतम्. माशु. Ashu இல்ல பகினி, Ashu. Aneetam அப்புறம் ஆஷுன்னு பிரிக்கிறேன். I think your Sharda Bhagini, my voice is clear. Yes Bhagini, your voice is clear. Then why you are chanting Ashu instead of Ashu Mashu? When we chant Pada by splitting, you listen carefully and then chant. Aneetam. आनीतम्. आनीतम्. Ashu. आशु. आशु. भृगुभिः. 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 महसा. 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 अभिभूतैः.
अभिभूतैः अभिभूतैः त्वां 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 रम्यरूपं रम्यरूपम् असुरः असुरः पुलक पुलक आवृत आवृत अङ्गः अङ्गः भक्त्या भक्त्या समेत्य समेत्य सुकृती सुकृती परिनिज्य परिनिज्य पादौ पादौ तत् तत् तोयम् तोयम् अन्वधृत अन्वधृत मूर्धनि मूर्धनि तीर्थतीर्थम् तीर्थतीर्थम् आनीतमाशु आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः Bru, it is not Bru Bagini, Bru only you should say. Bhrigu, Bhrigubhirmahasa. भृगुभिर्महसा Together. Bhrigubhirmahasabhibhutaihi. भृगुभिर्महसाभिभूतैः You practice that. It is not Bru, it is Br only. When you say Br, your lips will go this side. Bru means O shape. So that you remember and chant. Bhrigubhir. भृगुभिर् Bru, you are saying that you practice separately, okay? Yes. Tvam ramya roopam. त्वां रम्यरूपम् Tvam ramya roopamasurah. त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती भक्त्या समेत्य सुकृती परिनिज्य पादौ परिनिज्य पादौ तत्तोयमन्वधृत तत्तोयमन्वधृत मूर्धनि तीर्थतीर्थम् मूर्धनि तीर्थतीर्थम् आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः आनीतमासु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिनिज्य पादौ
भक्त्या समेत्य सुकृती परिनिज्य पादौ भक्त्या सुमेत्य सुकृती परिनिज्य भक्त्या समेत्र सुकृती परिपूज्य पादौ परिनिज्य पादौ परिनिज्य पादौ परिनिज्य पादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् तत्थोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् There also, Druta you are saying. Druta means who sound will come. I am saying Dr, Druta, Dr. There is a difference. There also Brigu, Brugu. So you have to change that one, Bagni, that there is a vast difference. So if you chant Brugu, it is wrong. And Druta also wrong. Druta, the symbol itself will change differently. So you just practice that well. There is a vast difference between Brigu, Brugu, U sound and I sound, okay? Yes. Anitamashu Bhrigubhir Mahasabhi Bhutaihi Tvam Ramya Rupamasura Pulakavritanga आनीतमासु आनीतमासु भृगुभिर् आनीतमासु you write BRU is different and BRI is different. Bril. It is not Bru. Bril. Like that you practice separately at home. Yes. Now you chant. आनीतमासु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः आनीतमासु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिनिज्य पादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् भक्त्या समेत सुकृती परिनिज्य पादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् भक्त्या समेत्य सुकृती परिनिज्य पादौ तत्तोमयन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् Yes, full shloka Bhagini. आनीतमासु आनीतमासु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिनिज्य पादौ तत्तोमयन्वधृतमूर्धनि तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् आनीतमासु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिनिज्य पादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम्. Yes, Uttama Bhagini. You practice Brigu, Dhrita and all, huh? Yes. Rupa Mahendra Bhagini. आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिनिज्य पादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धिनि तत्तोयमन्वधृतमूर्धिनि तीर्थतीर्थम् Murdhani. Ha is Murdhani Murdha only. Ni is for na only for E. Yes. Murdhani. Murdhani. Last line one more time, Bhagini. तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम्. Yes, Uttama Bhagini. Malti BS Bhagini.
मालती BS भगिनी आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिनिज्य पादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् Uttama Bhagini. कला रंगनाथन भगिनी आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिनिज्यपादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् Uttama Bhagini. मृतवल्ली रंगाचारी भगिनी आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमहुसर्पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिनिच्य भूपादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् Second line, Tvam Ramya, that line one more time, Bhagini. त्वां रम्यरूपमसुरपुलकावृताङ्गः. Yes, Uttama Bhagini. Move on to the next shloka, that is the last shloka of this Dashakam 30. प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुतदिदं दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् सत्त्वौ विभो गुरुपुरालय पालयेथाः प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुतदिदन्दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् सत्त्वौ विभो गुरुपुरालय पालयेथाः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम 30तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते. So here Prahlada Vamshajataya Kratubhir Dvijeshu Kratubhir is Mahaprana here and then Vishwasatonu Tadidam ends with Makaraha. So Anuswara rule here Tadidam Ditijopi Leve Yatte Padambu Girishasya Shirobhilalyam Yatte Padambu Girishasya Shirobhilalyam Shirobhi is Mahaprana. Then Sattvam ends with Makaraha. So here already Sattvam you automatically we can't chant Sattvam like that. Automatically Titvam will come. Sattvam Anuswara will here. Vibho is Mahaprana. Guru Puralaya Palayethaha Yethaha is Mahaprana. So here in the last shloka, Bhattatri is saying Diti, son of Diti, the Asura Bali, that is Diti Jopilebhe. The son of Diti, the Asura Bali, was very fortunate enough to get that water from thy feet, which sanctifies even the head of Shiva. This may probably because he was born in the line of Prahlada or otherwise he had performed many sacrifices or because of his faith in service to holy men. Oh, all-pervading Lord of Guruvayur, please protect me. So Bali, the Diti is the mother of all the Asuras. Aditi, mother of Devas. So Diti's son Asura Bali, he is very fortunate to get this holy water
from Bhagavan's feet. Because, why? Because this may be due to the following reasons. Either one of the reasons or all may be the reasons. He belongs to the Prahlada Vamsha. The Prahlada is a very good bhakta of Bhagavan Narsimha. So Bhagavan, so if he was born in the line of Prahlada, or because he performed many sacrifices, many yagas, yajnas, or he has faith, Bali has faith in servicing to holy men. Maybe these all the reasons that he has fortunate to get this holy water of Bhagavan's feet to get. So such a Bhagavan, Vibho is all pervading Bhagavan of Guruvayur, please protect me. That is the thing Bhattatri is just asking Bhagavan. So, Ditiyin Mahanana Asrogula Bali Chakravarti, உன்னுடைய திருவடி தீர்த்தத்தை தன் தலையில் தெளித்துக் கொள்ளும் பாக்கியம் பெற்றவனானான். சிவபெருமான் தலையில் புனிதமாக விளங்கும் உன்னுடைய திருவடி தீர்த்தத்தை அடைந்தான். அவன் பிரகலாத வம்சத்தில் வந்த காரணம், அல்லது அவன் செய்த யாக யஜ்ஞங்களின் பலனே, அல்லது புனிதவர்களை பூஜித்த பலனே. எங்கும் உள்ள பகவானே, குருவாயூருள் குடிக்கொண்டிருக்கும் குரு பாதபுரிஷா, என்னையும் காத்து அருள் செய் என்று பட்டத்திரி இந்த ஸ்லோகத்தில் குருவாயூரப்பனை வேண்டி இங்க முடிக்கிறார். இன்னும் வாமன் அவதாரம் எடுத்து பலி சக்கரவர்த்தியை இது பண்றது அடுத்த இதுல நம்ம பலி தர்ப்பணாரணத்துல பார்க்க போறோம். சோ இங்க அவர் கிடைச்ச அந்த தீர்த்தத்தோட புனிதத்தன்மை எதனால இருக்கும்னு சொல்றார். அப்படிப்பட்ட தீர்த்தத்து பகவானுடைய பாதம் பட்ட தீர்த்தம், அப்படிப்பட்ட பகவானான குருவாயூரப்பா என்னையும் காத்தருள்னு சொல்லி இந்த தசகத்துல முடிக்கிறார் பட்டத்தில். பிரஹ்லாத வம்சஜதயா க்ரதுபிர்த்விஜேஷு விஸ்வாசதோனு ததிதந்திதிஜோபி லேபே யத்தே பதாம்புகிரிஷஸ்ய சிரோபிலால்யம் சத்வௌ விபோ குருபுராலய பாலயேதாஹ. Yes. Riya Balaji Bagni. பிரஹ்லாத வம்சஜதயா க்ரதுபிஹ த்விஜேஷு விஸ்வதः விஸ்வாசதः நு ததிதம் Ditijah, we have to split. Ditijah. Api. Lebhe. Yatte. Pada ambu. Girishasya Shiraha Abhilalyam Sattvam Vibho Gurupura Alaya Palayethaha Prahlada Vamshajataya Kratubhirdvijeshu Vishwasatonu tadidam
ददितं विश्वासतोऽनुददितं दितिजोऽपि लेभे दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् शिरोभिलाल्यम् सत्त्वौ विभो सत्त्वौ विभो गुरुपुरालय पालयेथाः गुरुपुरालय पालयेथाः प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुतदिदन्दितिजोऽपि लेभे विश्वासतोऽनुददितं दितिजोऽपि लेभे विश्वासतोऽनुददितं दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् सत्त्वौ विभो गुरुपुरालय पालयेथाः सत्त्वौ विभो गुरुपुरालय पालयेथाः सत्त्वौ विभो गुरुपुरालय पालयेथाः प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुतदिदन्दितिजोऽपि लेभे प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुददितं दितिजोऽपि लेभे प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुददितं दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् सत्त्वौ विभो गुरुपुरालय पालयेथाः यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् सत्त्वौ विभो गुरुपुरालय पालयेथाः यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् सत्त्वौ विभो गुरुपुरालय पालयेथाः इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम वामनावतारवर्णनं नाम त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् 30तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते यस श्लोका भगिनी प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुददितं दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् सत्त्वौ विभो गुरुपुरालय पालयेथाः
प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुददितन्दिति चोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् तत्त्वौ विभो गुरुपुरालय पालयेथाः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम 30तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। उत्तमं भगिनि। राखी सनोज भगिनी। प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु दितिजोऽभिलेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् सत्त्वं विभो गुरुपुरालय पालयेथाः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम 30तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। उत्तमं भगिनि। 30तमम्, it is not 30तमम्. Ittha is there, huh? Yes, ma'am. Next devotee. चंद्रा अनंतकृष्णन भगिनी। प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुतदितन्दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् सत्त्वं विभो गुरुपुरालय पालयेथाः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम 30तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। Yes, उत्तमं भगिनि। आर विमला भगिनी। प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुतदितन्दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् सत्त्वौ विभो गुरुपुरालय पालयेथाः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतार वर्णनं नाम 30तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। Yes, उत्तमं भगिनि। पोन्सेल्व मीना भगिनी। प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुददितन्दितिजोऽभिलेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् सत्त्वौ विभो गुरुपुरालय पालयेथाः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम 30तमं दशकं समाप्तम्। 30तमं भगिनि। 30तमम् इल्ल, 30तमम्। सप्तमम्. Ta is there and one more ta on the top of ta. Small line over ta is Trimshattamam here. सप्तमं दशकम्. Yes, I will chant the entire dashakam one time. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Atha Shrimannarayaniyam Trimshattamam Dashakam Vamanavatar Varnanam
शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुः क्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरान् त्रिलोकीम् चक्रे वशे स तव चक्रमुखादभीतः पुत्रार्तिदर्शनवशाददितिर्विषण्णा तङ्काश्यपन्निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यं सा द्वादशाहमचरत् त्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुजवपुः स्वयमाविरासीः नम्राजतामिह भवत्तनयो भवेयम् गोप्यम् अदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निदधत्तदानीम् प्राप्तोऽसि गर्भमदितेः प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपम् सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तम् पुण्याशमन्तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृततूर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्याम् त्वन्तक्षणे पटुतमौ वटुरूपमाधाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जीदण्डाजिनाक्षवलयादिभिरच्यमानः देदीप्यमानवपुरेश कृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् रात्रेण भाविमहिमोचितगौरवं प्राक् व्यावृण्वतेव धरणीं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मतिरणार्थमिवादधानः दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुम् तान्नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषित्वयि रुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनोऽनु सनत्कुमारः योगीनुकोऽयमिति शुक्रमुखैः शशङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिनिक्ष्य पादौ तत्तोऽयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुतदिदन्दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् सत्त्वौ विभो गुरुपुरालय पालयेथाः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम 30तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. So we will just move on to the next dashakam. Screen visible, Bhagini? No, Bhagini. Screen is not shared, Bhagini. Now, Bhagini? Yes, Bhagini. Now it's clear. Okay. Yes, this 31st dashakam of Sriman Narayanyam is Ekatrimshattamam dashakam. The number 31. Ekatrimshattamam dashakam. Bali Darpaharana Varnanam. The name of this dashakam is Bali Darpaharana Varnanam. So we will see a small introduction about this and then we will move on to the shlokas. So here Narayanyam Dashakam 31 describes the humbling of King Mahabali's pride by Lord Vamana, that is Trivikrama form. Following his vow to offer 3 steps of land, Mahabali is questioned by Vamana, leading to the humbling of his ego and subsequent blessings of liberation and domination over the underworld, that is the
Sutala. மகாபலியின் செருக்கை அழித்தல். வாமனாவதார் மகாபலியோட செருக்கை அழித்தல். நான் தான் அப்படிங்கிற செருக்கை அழிக்கிறது. வாமன அவதாரமாக வந்து மகாபலியின் அகந்தையை அடக்கி ஞானத்தை அளித்து சுத்தலம் என்ற உலகிற்கு அரசனாக்கி சிரஞ்சீவியாக்கும் நிகழ்வை விவரிக்கின்றது. So in this Dashakam, Bhagavan asked for 3 steps of land to Mahabali because he is a very famous for his offerings. Whatever anybody asked him, he will just give. So he was pride of that one. So to remove that pride, Bhagavan took the avataram of Vamana and a short form of small brahmachari, and then he is asking for 3 steps. And Mahabali was not able to give, and then his ego was being suppressed by Bhagavan, and then he, as he is a very good devotee of Bhagavan, he got the blessings of Bhagavan, and he is being given the underworld to rule the underworld. Sutala, that is the entire Dashakam of this Balidarpa Harana Varman. So Bhattatriya has set this Dashakam in meter. We can see the meter for this Dashakam as Mandakranta. It is a different one, but we can easily follow this one also. So you can see the number of syllables per pada. One pada 17 syllables, and the yati you can split as 4, 6, 7. 4, 4. You can count and 4 for if you want to chant by breaking the pada. You can take 4 or 6 or 7 like that only. You can do that one. So that is the Mandakranta is the Vrittam, that is the meter for this Dashakam Bhattatriya said. So with this small introduction, we will just move on to the Dashakam shlokas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Atha Shrimanarayaniyam Ekatrimshattamam Dashakam Balidarpaharana Varnanam. प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नजितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किं ते समभिलषितौ विप्रसूनो वदत्वं वित्तं भक्तं भवनमवनीवापि सर्वं प्रदास्ये प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नजितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किं ते समभिलषितौ विप्रसूनो वदत्वं वित्तं भक्तं भवनमवनीवापि सर्वं प्रदास्ये. So here all the 17 is being chanted fully. But if you want, you can split 4, 6, 7. But better try easy only. You can chant with the 17 as the meter reference. So Preetya Daityaha Tavatanumaha. So Preetya Daityas, it is already given that Visarga is replaced by Sakaraha. So Preetya Daityas Tavatanumaha. Visarga is followed by Prekshanat Sarvathapi. Ta is Mahaprana. So Visarga followed by Pakaraha. So Tanumahaf Prekshana. Like that it should come. Twamaradhyan Ajita. Twamaradhyan Ajita. So Thya is Mahaprana. Tha Mahaprana. Adhita Rachayan Anjalim Sanjagatha. Sanjagada. Mattaha Visarga followed by Ka. So it is Jihva Mulya. Mattah. Kim ends with Makara, so Anusura root. Mattah kinte Samadhi Lashitam. Samadhi Ba Mahaprana and Lashit Samadhi Lashitam ends with Makara, so Anusura rule next Vavarga. So that is Samadhi Lashitau Viprasuno Tadatwam. Tadatwam here is a Ditwam here. Tada ends with Rasvasura Twam Samyutaksharam. So you have one more Ta here. Tadatwam. Vittam Bhaktam, Bha Mahaprana, Bhavana
Bhavanam avanim is bhavanam avanim. So here it also ends with makaraha. So anuswara rule here. Bhavanam avanim vapi. So bha is mahaprana and bhavanam avanim vapi sarvam pradasye. So the meaning for this shloka is here. Bhattatri just addressing Bhagavan as a powerful one who cannot be defeated by anyone. O invincible one, pleased to on seeing thy glorious majestic form, the Asura Bali honored and worshipped thee in every way. He said with folded palms, O Brahmin boy, what do you desire from me? Tell me, wealth, food, house or land or all of them, I shall give you all. So this is the pride of Mahabali. He is asking Bhagavan himself, who is the person who is giving all to everyone. So he don't know that the person, that Brahmachari boy is Bhagavan. He doesn't realize that one. But even then he is being told by the Shukracharya also, he was ready to give whatever that boy wants because he is famous for his saving his words. So அவனுடைய வார்த்தை, சொன்ன வார்த்தையை காப்பாத்துற அந்த எது கேட்டாலும் கொடுக்கிற தன்மையுடைய கருணவள்ளல் அவனும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால எது வேணாலும் கேளு நான் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. So he is Bhagavan. So to Bhagavan himself, after worshipping and honoring him, he is just asking by folding his palms, what you want, whatever you want, I can give. You want wealth, you want food, or you want land, or all of them you want, I can give you. Like that, he is just telling to Bhagavan. குருவாயிரப்பா எவராலும் வெல்லப்படாதவரே அப்படின்ட்டு பட்டத்திரி விழிச்சு சொல்றார். வாமன மூர்த்தியாக வந்த தங்களை வரவேற்று பாத பூஜை செய்து உபசரித்த மகாபலி, திதியின் புதல்வனான அவன், உன்னுடைய திருமேனி ஒளியால் மகிழ்ந்த அவன், எல்லா விதங்களிலும் உன்னை ஆராதித்தான், கௌரவித்தான். இங்க பகவான் ஆயுதத்தால அவனை வெல்லல. எதால வென்றிருக்கா? தன்னுடைய திருமேனி அழகினால். அந்த குழந்தை வடிவத்துல அந்த பகவானை பார்த்த உடனே யாருக்குமே பிடிச்சிடும் இல்லையா? அதனால அந்த பிரம்மச்சாரியா அழகா கொடையை ஏந்திட்டு தண்டம் வர அந்த பகவானை பார்த்த உடனே அவனுடைய திருமேனி அழகிலேயே மயங்கி பலி ஆராதித்தா. சோ அவன் பகவான் எப்படி வென்று இருக்காருன்னா, தன்னுடைய திருமேனி அழகிலேயே அவனை வென்று விட்டார். தன் கைகளில் அஞ்சலி முத்திரை காட்டி உன்னுடன் கீழ் வருமாறு சொன்னான். பிரம்மச்சாரி குமாரா, நீங்கள் என்னிடம் இருந்து வேண்டுவது என்ன? சொல்லுங்கள், எதுவானாலும் தருகிறேன். செல்வமா, உணவா, வீடா, நிலமா, எது வேண்டுமானாலும் தருகிறேன். அல்லது இவை அனைத்தும் வேண்டுமா? எது வேணாலும் தருகிறேன் என்று தங்களிடம் கூறினான்ட்டு பட்டத்திரி சொல்றார். So we'll just chant and learn this shloka also. प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नजितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किं ते समभिलषितौ विप्रसूनो वद त्वं वित्तं भक्तं भवनमवनीवाप्ति सर्वं प्रदास्ये. लीना मेहुल दामा भगिनी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः. ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः. ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः. अथ श्रीमन्नारायणीयम्. अथ श्रीमन्नारायणीयम्. अथ श्रीमन्नारायणीयम्. एकत्रिंशत्तमं दशकम्. एकत्रिंशत्तमं दशकम्. एकत्रिंशत्तमं दशकम्. बलिदर्पहरणवर्णनम्. 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 प्रीत्या
प्रीत्या दैत्यः 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 तव 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 तनुमहः 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 प्रेक्षणात् 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 सर्वथापि 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 त्वाम् त्वां त्वाम् आराध्यन् 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 अजित 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 रचयन् 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 अञ्जलिम् 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 सञ्जगाद 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 मत्तः 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 किन्ते 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 समभिलषितम् समभिलषितं समभिलषितं विप्रसूनो 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 वदत्वम् वदत्वं वदत्वं वित्तम् वित्तं वित्तं भक्तम् भक्तं भक्तं भवनमवनीम् भवनमवनीं भवनमवनी वापि 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 सर्वम् सर्वं सर्वं प्रदास्ये 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 प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमहः प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमहः प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमहः प्रेक्षणात् सर्वथापि प्रेक्षणात् सर्वथापि प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नजितरचयन् 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 अञ्जलिं सञ्जगाद अञ्जलिं सञ्जगाद अञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किन्ते मत्तः किन्ते मत्तः किन्ते समभिलषितम् समभिलषितं समभिलषितं विप्रसूनो वदत्वम् विप्रसूनो वदत्वं विप्रसूनो वदत्वं वित्तं भक्तम् वित्तं भक्तं वित्तं भक्तं भवनमवनीवापि भवनमवनी वापि भवनमवनी वापि सर्वं प्रदास्ये सर्वं प्रदास्ये सर्वं प्रदास्ये प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नजितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद रचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद त्वामाराध्यन्नजित रचयञ्जलिं
सञ्जगाद रचयन्नञ्जलिम् यचनञ्जलिं अजित रचयन्नञ्जलिम् I started with Ajita only. Ajita rachayannanjalim. Ajita rachayannanjalim. Anjalim rachayan. Then nanjalim together. Anjalim na together. Rachayannanjalim. Rachayannanjalim. Yes, you chant that line, Bhagini. Rachayannanjalim. Okay, full line. Twamaradhyannajita rachayannanjalim sanjagada. Rachayannanjalim, you break the rachayan anjalim, but when you chant together, rachayannanjalim, anjalim like that. Okay. Twamaradhyannajita rachayannanjalim sanjagada. Anjalim. Okay. Rachayananjalim means he is just Anjalim means he is just holding with his folded hands. He is just praying to Bhagavan. Anjalim is this type of mudra like that. Mattah kinte samabhilashitau viprasuno vadatvam. Mattah kinte samabhilashitau viprasuno vadatvam. Mattah kinte samabhilashitau viprasuno vadatvam. Vittam bhaktam bhavanamavani vapi sarvam pradasye. Vittam bhaktam bhavanamavani vapi sarvam pradasye. Vittam bhaktam bhavanamavani vapi sarvam pradasye. Pritya daityastavathanumah prekshanat sarvathapi twamaradhyannajita rachayannanjalim sanjagada. Pritya daityastavathanumah prekshanat sarvathapi twamaradhyannajita rachayannanjalim sanjagada. Pritya daityastavathanumah prekshanat sarvathapi twamaradhyannajita rachayannanjalim sanjagada. Na, inch, ja, everything. Nachalim, you are saying. Anjalim, nanchalim. You practice that, Agni. Okay. Mattah kinte samabhilashitau viprasuno vadatvam. Vittam bhaktam bhavanamavani vapi sarvam pradasye. Mattah kinte samabhilashitau viprasuno vadatvam. Vittam bhaktam bhavanamavani vapi sarvam pradasye. Mattah kinte samabhilashitau viprasuno vadatvam. Vittam bhaktam bhavanamavani vapi sarvam pradasye. Yes, full shloka, Bhagini. Pritya daityastavathanumah prekshanat sarvathapi twamaradhyannajita rachayanjalim sanjagada. Mattah kinte samabhilashitau viprasuno vadatvam. Vittam bhaktam bhavanamavani vapi sarvam pradasye. Yes, Uttamam, Bhagini. We can have
one second, Bhagini. We will have this practice of this shloka in the next session as the time is getting over. So again, we will see this one more time. I will chant and 4 devotees can chant in the next session, okay? Because we are running out of time. So I will just end the session with the Shanti mantra. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukkha Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti.